of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. I welcome Professor Pavnesh Kumar ji to this afternoon session, and I would now hand over the session to him. Over to you, sir. My voice is audible, sir? Yes, very much audible, sir, and your screen is also visible. Okay. So, first of all, just 1 minute, sir. Just let me. 1 minute. Okay. So, first of all, let me take this opportunity to express my sincere gratitude to the Marathwada University, Aurangabad, for Dr. Bhimrao Ambedkar Marathwada Vishwavidyalaya, Aurangabad, Maharashtra, for inviting me as a resource person in the 24th orientation and sensitization program. So the topic which has been allocated to me today is leadership insights from Indian scriptures. So for the next 1.5 hours, near about, I will be discussing on this topic. And I would love to interact with the participants, because I know all the participants are very learned, because this is specially made for the faculty members. So they are all learned. I am not going to discuss something new. You might be knowing everything, but just I would like to present it in 1 hour and 15 minutes. And after that, if you have any questions, you can have notes, because I will share these slides with the organizers. So the organizers will share this PPT with you all also. So I am expecting some questions from the learned participants. So let us see in the topic, what is leadership in Indian thought? The first is, in India, in Indian thought, we always assume leader to be a dharmic leader. That is, the leader, a type of leadership which is rooted in duty and righteousness, not personal gain. जो हम तो आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर अलग अलग जगहों से होंगे. सो फर्स्ट थिंग इज कि इन इंडियन थॉट, धार्मिक लीडरशिप इज ए कॉन्सेप्ट. व्हाट इज धार्मिक लीडरशिप? द लीडर बेसिकली फोकसेस ऑन द ड्यूटी, not on the personal gain. Number two, there is an integral vision with the leaders. Leaders have integral vision, as they play both the spiritual and also act as administrative guide. तो जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लीडर का जो एक सोच है, वो ये है कि लीडर शुड बी स्पिरिचुअल as well as he should also guide for the in the administrative way. तीसरा चीज है, we see in Indian thought, we see leader as a balance of bhakti and shakti. That is, power must be balanced with humility and devotion. हम ऐसा सोचते हैं कि जो लीडर है उसके अंदर दोनों का अच्छा समन्वय होना चाहिए, भक्ति और शक्ति दोनों का. तो भक्त भी हो अपने जनता का, अपने कर्मचारियों के लिए, और जहां जरूरत पड़े शक्ति के साथ उनके साथ खड़ा भी रहे. तो भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय. नंबर फोर्थ thing which Indian thought of leadership is service before self. That is, it is inspired by seva, that is service ideals across all traditions. हम जितने भी traditions देखते हैं, वहां पे लीडर जो है वो सर्विस बिफोर सेल्फ को रखता है. पहले आप फिर मैं. ठीक है, जो हमारे एनएसएस का स्लोगन भी है, नॉट मी बट यू पहले. तो ये हमारे लीडरशिप का एक थॉट है इंडिया में. फोर्थ है कि लीडरशिप को तपस्या के तौर पे लिया जाता है. दैट इज ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट प्रिविलेज. फ्रेंड्स,
you might be knowing the word responsibility. Responsibility is never given, it is always taken. So we expect leadership as tapasya. हमारे यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द भगवत गीता, फर्स्ट जो हमारे ध्यान में आता है किसी लीडर के बारे में, हम हमेशा सोचते हैं भगवत गीता के बारे में, बिकॉज भगवत गीता टेल्स अबाउट हु इज एन आइडियल लीडर. सो बिकॉज भगवत गीता सेज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मीन्स फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन आउटकम. तो हमेशा जो लीडर होता है, भगवत गीता में जो इसकी परिकल्पना की गई है कि वो फोकस करता है एक्शन पर, न कि आउटकम पे. जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए लीडर विच इज गिवन इन भगवत गीता इज दैट ही शुड बी स्थिति प्रज्ञ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थिति प्रज्ञ? कि हर सिचुएशन में बैलेंस रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान तरीके का व्यवहार हो उसके अंदर. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. सो लीडर के पास जो इमोशनल स्टेडिनेस है इज द की. तो विच भगवत गीता से इसकी चाहे समय अच्छा हो समय बुरा हो, जो हमारी स्थिति हो वो एक समान हो. तो स्थिति प्रज्ञता के बारे में भगवत गीता कहता है कि लीडर शुड बी स्थिति प्रज्ञ. नंबर थर्ड इज डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो. इट्स भगवत गीता सेज दैट द लीडर शुड डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम ईगो. ट्रू लीडर सरेंडर्स ईगो. ईगो के साथ मित्रों कभी भी कोई अच्छा लीडर नहीं हो सकता. जिसके आप हम कहते हैं रावण भी एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का राजा होता है, लीडर होता है, दुर्योधन भी लीडर होता है, लेकिन दोनों के अंदर एक समान बुराई थी, और वो थी अहंकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईगो. सो जो गीता कहता है, भगवत गीता, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था, और एक तरीके से ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए, परिस्थितियों में कैसा रहना चाहिए. वो कहता है कि लीडर शुड डिटैच फ्रॉम ईगो. नेक्स्ट, योगः कर्मसु कौशलम. ये आप लोगों ने कई जगह इसको पढ़ा होगा, कई सारी संस्थाओं का ये मुख्य वाक्य होता है, योगः कर्मसु कौशलम, दैट इज स्किल इन एक्शन डिफाइंस ट्रू योगा एंड लीडरशिप. इसका मतलब है कि लीडर का काम सिर्फ बोलना नहीं है, उसको करना भी है. जो जो बोले उसको करे, ऐसा भगवत गीता कहता है. और कृष्ण को जैसा हम देखते हैं, वी सी कृष्ण एज द चैरियट इन भगवत गीता, who says that leads without leading enables others. So जब भी लीडर को हम कहते हैं कि लीडर should lead with example, he should lead not by words by action. तो कृष्ण यहाँ पे हमारे सामने एक उदाहरण है जो लीडर के तौर पे काम करते हैं अर्जुन का. नेक्स्ट, यदि हम दूसरा जो इंसाइट है उसको देखें, रामायण को, तो राम लीडरशिप के इथोस क्या है, राम से हम लीडरशिप का क्या चीज सीख सकते हैं. बिकॉज माई टॉपिक इज लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स. तो भगवत गीता के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज एडहेरेंस टू धर्म इवन एट द कॉस्ट ऑफ द थ्रोन. तो हम जब हम राम बोलते हैं मित्रों, राम में आप देखिए आपका मुंह ओपन हो जाएगा, ये जीवन है, म से मरण. तो इसका मतलब जीवन से मृत्यु तक क्या हमारा सफर कैसा होना चाहिए, राम के आदर्शों के आधार पे होना चाहिए, जो राम ने आदर्श तय किए. तो राम का एक आदर्श जो लीडर ले सकते हैं, दैट इज एडहर. किसी भी कंडीशन में हमें एडहर करना चाहिए धर्म से. आपको मालूम है कि जब उनको एक बार उनके पिताजी बोलते हैं, राजा दशरथ बोलते हैं कि आप जो है आपको वनवास दिया जाता है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी गणित के वो इसको राजी हो जाते हैं, मुकुट को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको छोड़ के चल देते हैं. तो ये एक लीडर से हम क्वालिटी को देख ले सकते हैं. लिसनिंग टू एडवाइजर्स, अनदर थिंग इज दैट ए लीडर शुड लिसन टू द एडवाइजर्स. लाइक द राम है सीक्स काउंसिल फ्रॉम सेजर्स एंड मिनिस्टर्स. तो राम को अगर आप देखें, पूरा रामचरितमानस कोरोना के समय रामायण जो है प्रदर्शित किया गया, उसके बाद उत्तर रामायण मतलब
भी दिखाया गया आप लोगों को, उसमें बताया गया कि राम जो है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा रामायण में, वो रीछ, भालू, बंदर, जानवर, पंक्षी, गरुड़ जैसे पंक्षी, सबरी और गुरु, राजा, सभी से अपने एडवाइजेस लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो सभी लोगों से राय ले, मंथन करे, विचार विनिमय करे। ये हम राम से सीख सकते हैं। ह्यूमिलिटी इन पावर, वियर्स पावर लाइटली। इसका मतलब एक राजा, एक लीडर वो होता है जिसका जो मेन वस्त्र है वो विनम्रता हो, उसके जबान पे विनम्रता हो, जैसे बर्फ की तरह उसकी उसकी जबान होनी चाहिए, ठंडी जबान। भले उसके अंदर इरादे लोहे के हों, लेकिन उसकी जबान जो हो वो एकदम बर्फ की हो, ऐसा हम सोचते हैं, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट जो हम राम से देख सकते हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस, जो मैंने बताया, केयर्स फॉर इवन द स्मॉलेस्ट वॉइस। ए ट्रू लीडर इज वन हु केयर्स अबाउट इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन इन हिज और हर ग्रुप। जो अपने ग्रुप मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स का एक छोटे भी सदस्य के बारे में सोचे, ऐसा इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। राम राज्य आइडियल है, क्यों? ये यूटोपियन गवर्नेंस रूटेड इन जस्टिस एंड कंपैशन। तो वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये यूटोपियन गवर्नेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। राम राज्य का मतलब क्या? एक ट्रू लीडर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे राज्य, ऐसे अगर वो कॉर्पोरेट में तो ऐसा अपना वातावरण स्थापित करे जिसमें सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपन्न हों, खाली मेटेरियलिस्टिक चीजों से संपन्न न हो, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है उसके अलावा भी वो सफल हो। तो मेरी आवाज आ रही है मित्रों? एक बार कंफर्म करेंगे? माई वॉइस इज ऑडिबल? माई वॉइस इज ऑडिबल फ्रेंड्स? यस सर। अच्छा, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी अनदर टॉपिक, जो उपनिषद में क्या बातें होती हैं, उपनिषद क्या हमको इंसाइट देता है इनर लीडरशिप के बारे में। क्योंकि जो लीडरशिप है वो इनर से, अंदर से आता है। जब हम, जैसे लीडरशिप, सेल्फ नॉलेज इज पावर। जो स्वयं के, अगर आप बुद्ध के दर्शन को पढ़ें, बुद्धिज्म को दर्शन को पढ़ें, जब उनका अंत में वो मृत्युशैया पे होते हैं 80 वर्ष की उम्र में, उस समय उनसे उनका जो शिष्य होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बुद्ध के साथ आनंद रहते हैं उनके शिष्य, जो कि उनके चचेरे भाई भी हैं। और कुशीनगर में जब उनकी अपनी अंतिम क्षणों में होते हैं 80 वर्ष की उम्र में, तो उनसे पूछते हैं कि आपके बाद हमारा नेतृत्व कौन करेगा? तो बुद्ध कहते हैं, अपो अप दीपो भव, आप अपना दीपक खुद बने। तो इसका मतलब है कि दुनिया जहां को जानने से पहले, एक ऐसा उपनिषद कहता है कि लीडर को सबसे पहले अपनी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ नॉलेज, क्योंकि वहीं से उसको पावर मिलती है। तत्त्वम असि, सी द डिवाइन इन ऑल बीइंग्स। उसको सभी के अंदर, एक ट्रू लीडर इज वन हु सीज डिवाइन क्वालिटीज इन ऑल हिज टीम मेंबर्स। तो ये चीज हमको उपनिषद बताता है, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए, तो इसको वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। तो और ये भी कहता है नेति नेति अप्रोच, कहता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिटैचमेंट। तो ये चीज हमें होनी चाहिए कि हमारी थिंकिंग जो है, आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, विच टॉक्स अबाउट डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये इन तमाम चीजों की कैफेटेरिया अप्रोच की बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट क्वेश्चन, यू विल नॉट बिकम क्रिटिकल, एंड इफ यू आर नॉट क्रिटिकल, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। सो जो हम नीति नीति का जो गुण है वो राजा या लीडर के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी बियॉन्ड इल्यूजन। तो ब्रह्म विद्या के बारे में एक अच्छे लीडर के पास ब्रह्म विद्या होनी चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इल्यूजन नहीं, रियलिटी जिसको से अंडरस्टैंड। मित्रों, यहाँ पे एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स, अंडरस्टैंड कौन कर सकता है? अंडरस्टैंड वही कर सकता है जो स्टैंड अंडर करे। जब तक हम किसी के सामने झुकते नहीं, तब तक हम कुछ सीखते नहीं।
तो अंडरस्टैंड करने के लिए, और ब्रह्म विद्या तभी आती है जब आप स्टैंड अंडर करें, अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट, जो गुरु शिष्य का मॉडल है, उपनिषद कहता है यहाँ पे लीडर मस्ट फर्स्ट बी ए सीकर। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो उपनिषद कहता है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा दाता होना चाहिए, सीकर होना चाहिए, आप लोगों से ज्ञान लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये, तो गुरु शिष्य परंपरा में एक अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु से झुक कर विनम्रता पूर्वक ज्ञान का अर्जन कर सके। तो ये चीज हम मित्रों उपनिषद से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें धर्म पद का, बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि इंडियन, व्हेन वी टॉक अबाउट the insights from Indian scriptures, we cannot ignore the teachings of Buddha and Jains, because they have been the true leader. They have guided the society. They have reformed the society like anything. So Buddhas, and you might be knowing, friends, Buddha was born in a king family in near Bihar. Now it Lumbini. It is now in Nepal. आज की डेट में नेपाल में है। और हिज नेम ऑफ हिज फादर वाज राजा सुशोधन। एक राजा परिवार में पैदा होते हैं और एक बहुत बड़े संत बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, और एक बहुत बड़े धार्मिक लीडर बनते हैं, अपने बुद्धिज्म की स्थापना करते हैं जो बुद्ध है। और आपको जहां तक मालूम है, महावीर जैन, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जैन धर्म को स्थापित करने वाले, प्रचारित करने वाले महावीर जैन, जिनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, वो बिहार में पैदा होते हैं, वैशाली में, और सब कुछ अपना त्याग कर देते हैं। आप दोनों ही, चाहे राम को लें, चाहे आप बुद्ध को लें, चाहे आप जैन महावीर जैन को लें, ये तीनों में एक समानता आप पाएंगे। ये तीनों लोग एक राज परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन सभी मेटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उस सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए एक बड़े वर्ग को का नेतृत्व करते हैं। उनके आध्यात्मिक और जो उनका मानसिक विकास है, मानसिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल मेंटल डेवलपमेंट करके एक बड़ी सोशल क्रांति, जिसको हम कहेंगे सामाजिक क्रांति, करते हैं। लगभग आज से 2500 साल, 3000 साल पहले। क्योंकि जिस समय राजा जो बुद्ध हैं, महावीर जैन हैं, आपको मालूम होगा कि इन दोनों को संरक्षण राजा बिंबिसार करते हैं। बिंबिसार और बिंबिसार जो है, दोनों ही ग्रेट लीडर्स को जो है संरक्षण देते हैं। और धीरे धीरे आप देखते हैं जब एक राजा, एक सन्यासी बनता है। क्यों हम यहाँ बात कर रहे हैं बुद्धिज्म का? क्योंकि जब हम कुछ त्यागने की प्रवृत्ति, भारत की जो तासीर है, भारत के जो लोग हैं, वो ऐसे लीडर्स को जरूर पसंद, चाहे वो गांधी को आप लें, गांधी भी अपने सभी वस्त्रों का त्याग करते हैं, अपने अच्छे प्रोफेशन का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर त्यागी राजा। और जहां तक शिवाजी की बात होती है मित्रों, चूंकि आप महाराष्ट्र में हैं, शिवाजी को क्या बोला जाता है? जाड़ता राजा। जाड़ता राजा मतलब दूरदर्शी राजा, विजनरी लीडर। शिवाजी इज नोन एज विजनरी लीडर। तो शिवाजी, चाहे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनके अंदर कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं फ्रेंड्स। वो त्याग करते हैं अपने लोगों के लिए, और त्याग करके एक बड़े महान लीडर बन जाते हैं। जिनको पोजेसिवनेस जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर ईगो होता है, दे कैन नॉट लीड द सोसाइटी। So when we are talking about leadership, we cannot ignore Buddha. So right intention, तो true leadership begins in the mind. सबसे पहले जो क्रांति कोई भी बड़ी होती है मित्रों, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, चाहे वो हमेशा शुरू होती है मन से, मस्तिष्क में, और फिर क्रांति होती है। तो आप देख सकते हैं कि राइट इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर, विच वी कैन लर्न फ्रॉम बुद्ध। कंपैशनेट अथॉरिटी, लीड विदाउट कोर्सन। आपने ध्यान दिया होगा, जो बुद्ध होते हैं उनके ऊपर कई बार अटैक होते हैं। क्या मित्रों आपको मालूम है कि बुद्ध जब रहते हैं तो उनके चचेरे भाई जो हैं, उनके ऊपर कई बार अटैक करने का कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उनको वो क्षमा दे देते हैं। तो बड़े लीडर्स में क्वालिटी होती है कि विनम्रता के साथ रहना और बड़े बड़े गुनाहों को क्षमा कर देना। तो ये चीज हम कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते वो लोग। माइंडफुल स्पीच,
वर्ड्स शेप डेस्टिनीज। मित्रों, एक लीडर को जब भी हो, ए लीडर शुड ऑलवेज स्पीक विथ कॉशन, क्योंकि वेन एवर वी स्पीक, जब भी क्या होता है, एक छोटी सी बात जो है वो बुरी लग सकती है और उसे एक बड़ा एक घटना घट सकती है, दुर्घटना। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लेना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि क्या अगर चाणक्य को धनानंद ने यदि अपनी सभा में बुरा नहीं कहा होता तो क्या उसका अंत होता? इसमें आप लोग में से कोई हो तो बोले हाँ या ना। अगर चाणक्य को पूरी सभा में धनानंद ने अगर बेइज्जत न किया होता, गलत शब्दों का प्रयोग न किया होता, तो क्या उसका राजपाट चलता या नहीं? फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है कि पूरा नंद वंश का जो विनाश है उसके पीछे कारण है जो उसका लीडर धनानंद, वो अपशब्द बोलता है चाणक्य को, और उसके बाद उस वंश का नाश होता है। तो हम उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं फ्रेंड्स, कि जब कभी भी हम बोलें तो हमें माइंडफुल स्पीच होनी चाहिए। इक्वानिमिटी, स्टेबल माइंड इज ए स्ट्रॉन्ग माइंड। सो बुद्ध की जब भी आप मूर्ति देखते हैं, बुद्ध से एक चीज हम सीख सकते हैं। अगर मूर्ति में आप देखिए तो उनके कान लंबे लंबे हैं, हिज ईयर्स आर वेरी बिग, इतने बड़े बड़े कान हैं। वो क्या प्रदर्शित करते हैं कि हमें सुनना बहुत ज्यादा चाहिए, हमारा माइंड स्टेबल रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। तो बुद्ध से ये चीज लीडर सीख सकते हैं। ए जो अष्टांगिक मार्ग है, विच इज ऑल्सो नोन एज एट फोल्ड पाथ एज गाइड, इथिकल कंडक्ट होना चाहिए एक लीडर का, विजडम होना चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन, और अष्टांगिक मार्ग इसको बोला जाता है, सम्यक दृष्टि और तमाम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग एक राजा वहां से सीख सकता है, एक लीडर वहां से सीख सकता है। नेक्स्ट, जातक कथाएं। आपको मालूम है मित्रों कि जातक कथाएं रिलेटेड है, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर फ्रॉम औरंगाबाद, बहुत सारे लोग यहाँ पे औरंगाबाद से हैं, और आपके यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वहां आप लोगों ने जरूर विजिट किया होगा। उसमें कई सारी जातक कथाओं के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इसको आप जातक कथाओं से क्या लिख सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ पे कर्म के सिद्धांत को माना गया है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, हम अच्छा देते हैं। प्रकृति, मित्रों, प्रकृति की प्रतिध्वनि होती है, जो हम इस इन्वायरमेंट में, जो इस वातावरण में हम छोड़ते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो अहंकार हो, वही लौट के हमारे पास आता है। तो जातक कथाएं ये कहती हैं कि जो लीडर हो, यदि वो प्रेम के माध्यम से अपने प्रजा से व्यवहार करता है या अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, तो उसके कर्मचारी भी उसे प्रेम ही लौटाते हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। वाइज लीडरशिप फ्रॉम पास्ट लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ विजडम, हमें वाइज लीडरशिप बताता है जातक टेल्स। पेशेंस एंड जस्टिस, पेशेंस लीड्स टू क्लैरिटी, हमें ये कहती हैं जातक कथाएं कि पेशेंस और प्रिजर्वेंस, ये दो, परसिवरेंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यायप्रिय होना चाहिए किसी भी लीडर को, और सेल्फ सेक्रीफाइस, द बोधिसत्व मॉडल ऑफ गिविंग। तो मित्रों, यूएस जैसे देश में भी इस समय वीक ऑफ गिवनेस, हाउ टू गिव, मतलब एक एक सप्ताह मनाया जाता है जिसमें लोग देते हैं। और हम ऐसा भी देखते हैं, जब युद्ध होता है, अपने देश पे विपत्ति काल आता है, तो हम अपनी संपत्ति का दान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सेल्फ सेक्रीफाइस, न सिर्फ तन बल्कि धन और मन से यदि हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। स्टोरी किंग महासुदन की बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं, जो रूल्स विथ वर्च्यू एंड डिटैचमेंट। महासुदासन जो है, ये एक लीडर है जातक कथाओं में, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हमें रूल करना चाहिए। तो इसका रूल कैसे करना चाहिए? रूल विथ वर्च्यू एंड डिटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, और अब यहाँ पे मैं जैन आगम्स की बात करना चाहता हूं। तो जैन आगम मतलब जो जैन की जो किताबें हैं, उसमें क्या कहा गया है मित्रों? पहला, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब नॉन, जैसे पश्चिम का
वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. फ्रेंड्स, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच सेज दैट those who perform well in the organization, they should be rewarded, and those who basically are not contributing in the development of the organization, they should be penalized. So but the Jain agam से restraint and responsibility, मतलब हम क्या सीख सकते हैं? अहिंसा. अहिंसा का मतलब है प्रेम से अपना जो टीम है उसको समझाना, क्योंकि वहीं से हम प्रेम से ही पावर ड्रॉ करते हैं. अपरिग्रह. अपरिग्रह का मतलब है नॉन पॉजिटिवनेस, नो ग्रीड इन लीडरशिप. ए लीडर शुड नॉट बी ग्रीडी. कोई भी ग्रीडी, सत्ता लोलुप्त इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में. जो भी सत्ता लोलुप्त लीडर होता है, कभी वो जनता का कल्याण नहीं कर सकता. तो लोलुप्त का मतलब है उसकी जो है लालसा, उसकी उसकी जो है, हम कह सकते हैं ग्रीड. सो अपरिग्रह, इकट्ठा न करना. नेक्स्ट है अनेकांतवाद. अनेकांतवाद ये क्या कहता है? रिस्पेक्टिंग मल्टीपल ट्रूथ. कोई भी सत्य एक नहीं होता. जैसे मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, तो आप में से कोई एक आंसर बताइए. व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो? क्रो, एक कौवे का कलर क्या होता है? अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के बीच में से कोई आंसर दे दे. व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो? कौवे का कलर क्या होता है? ब्लैक. किसी ने कहा ब्लैक नहीं. आप तभी ब्लैक कह रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपने सफेद रंग का अभी तक कौवा नहीं देखा है. आपका ये आंसर चेंज हो जाएगा यदि किसी दिन आप व्हाइट कलर का क्रो देख लें. सच्चाई वो नहीं होती जो हम देख रहे हैं. यदि आज ये पता चल जाए कि 9 ग्रह के अलावा 10वां ग्रह भी है, तो हमारे फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे. हमको एक भैंस जो काले रंग की होती है, हमें अगर सफेद रंग की भी दिख जाए तो हम कहेंगे कि भाई जो जो भैंस होती है वो सफेद भी होती है. इसका मतलब है कि सत्य सिर्फ वही नहीं होता है जो हमें दिखता है. सत्य जो है उसके बियॉन्ड भी हो सकता है. तो जो अनेकांतवाद है जैनिज्म का, वो ये कहता है. मैंने आपको एग्जाम्पल मित्रों इसलिए दिया ताकि आप समझें कि सत्य जो होता है वो मल्टीपल हो सकता है. हम उसी को सत्य मानते हैं जो हमारा ज्ञान हो, जिनको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं. जैसे आपने ब्लैक कहा, लेकिन क्रो यदि कहीं पे व्हाइट भी दिख जाए किसी दिन, तो आप कहेंगे नहीं, क्रो जो है व्हाइट भी होता है और ब्लैक भी होता है. तो अनेकांतवाद ये कहता है जैनिज्म का कि हमें मल्टीपल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. जो देख रहे हैं सिर्फ वही सत्य नहीं, उसके बियॉन्ड भी सत्य हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं, एक लीडर जो देखता है वही सत्य. उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रश्न करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए मल्टीपल ट्रूथ्स को भी. कंट्रोल ओवर डिजायर्स. इनर मास्टरी प्रिसीड्स आउटर मास्टरी. मित्रों, मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अंदर से जितना ही खाली होता है, वो उतना ही बाहर की तरफ खोजता है. आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जो लोग मेटेरियलिस्टिक पोजीशन में बिलीव करते हैं, मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, अच्छा जीन्स हो जाए, टी शर्ट हो जाए, मेरे पास जूते हो जाए बढ़िया, आप ये पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत खाली होता है. और जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होता है, वो आपको बाहर मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं दिखेगा. जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको. चाहे वो श्री राम को लीजिए, बुद्ध को लीजिए, महावीर जैन को लीजिए, गांधी को लीजिए, किसी भी संत को लीजिए जो ट्रू संत हैं, वो कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों में अपने सुख का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अंदर से, इनर, वो बहुत ही अमीर होते हैं. बाहर से वो गरीब दिखते हैं लेकिन अंदर अमीर होते हैं. जो लोग बाहर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करते हैं, उनके समक्ष आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा तो वो अंदर से उतने ही खाली हैं. तो अंदर के खालीपन को कंपनसेट करने के लिए लोग बाहरी चीजों से कंपनसेट करना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों से कंपनसेट करना चाहते हैं. तो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से, that control over desires. A true leader is a leader who can develop the inner mastery, and because it precedes outer mastery. मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया
वो आपको जरूर सही लगा होगा कि अंदर से खाली व्यक्ति बाहर से अपने को भरना चाहता है, और जो अंदर भरा होता है उसको बाहर प्रदर्शन करने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। तो जो लीडर है उसको अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना। लीडरशिप थ्रू एग्जांपल्स लाइक गुरु लाइक लीडरशिप। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यक्ति आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको हम गुरु कहते हैं। इसका मतलब है अस्तो मा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही हम गुरु कहते हैं। तो एक गुरु का मतलब, एक लीडर का मतलब जो अपनी टीम को अंधकार से निकालकर, निराशा के वातावरण से निकालकर, अगर उसकी टीम हतोत्साहित है, उसे उत्साहित बनाने का कार्य, उसमें प्रकाश डालने का काम लीडर को करना चाहिए। उसको एक गुरु की तरह काम करना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट सिखिज्म, तो मैंने बुद्धिज्म की बात की, मैंने जैनिज्म की बात की, मैं थोड़ा सिखिज्म की बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा धर्म है जो हमें त्याग, तप का बल, इसके बारे में बताता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो सिख है, बड़े से बड़ा व्यक्ति जो सिख है, वो जाता है और गुरुद्वारे में सेवा प्रदान करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सिख हैं वो जाते हैं गुरुद्वारे में, और कई बार सेवा के तौर पर वो जूते भी साफ करते हैं। उसका कारण क्या होता है आप जानते हैं? वो अपने ईगो को क्रश करना चाहते हैं। वो ईगो को क्रश करते हैं। क्यों ईगो क्रश करते हैं? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए दे, अच्छा, someone is saying that please explain in English, so I will be using English now. So in Sikhism, seva, that is selfless service, is very important, leading through giving. So we can learn from the Sikh religion. Number two is sarbat da bhala. What it means? It means welfare of all, not few. If you are a true leader, you should think about sarvjan hitay sarvjan sukhay. Means we should think of welfare of all the team members, not only few. We should not be biased. So this we can learn from the religion Sikhism. Equality and justice. The Sikhism says that we should always, as a true leader, should follow equality and justice, that there should not be discrimination from the leader side with any of the team members. Next one is Guru Nanak's model, speak truth to power. Guru Nanak always used to speak truth. So as Sikhism says that a true leader should always should support he should always speak truth. Saint soldier ideal, balance of spiritual and temporal leadership. Friends, you might be knowing that the 10th Guru of the Sikh he was Guru Gobind Singh. He was not only a saint but also a soldier. So a true leader is a leader who can play both the role of a saint and a soldier. It means, as I have already discussed in the previous slides, he should always be using the bhakti and shakti. So now friends, let us come to the next slide. The next slide is related with the his sorry. So next slide. 1 minute, friends. So I'm coming to the topic. His historical story, King Ashok's transformation. Why I'm talking about the King Ashok's transformation, friends? Because you might be knowing that Ashok was a great leader of India, and after the Kalinga war, there was a 180 degree 180 degree transformation in the King Ashok. And as you see in Malaysia, whether it is Thailand, whether it is Sri Lanka, the King Ashok was the person who has basically been the instrumental in expanding the Buddhism philosophy in these countries. You found the Sri Lanka. Why Mahinda was his son? You might be knowing Mahinda, and you might be observing that most of the people in the, Sri Lanka, they use this name is very common, Mahendra. So
the King Ashok has transformed himself. It means what the King Ashok's transformation says, that a leader can transform himself or herself at any point of time, because the Ashok has transformed from warrior to Dharma king, that is leadership transformed by compassion. Dhamma as a state policy, and he has value over conquest. You might be knowing, after conquering the Kalinga and seeing the lot of destruction there, he has transformed from the warrior to the saint. So we could see, we can learn from him that he has made the Buddhism as a state, Buddhism, the philosophies of Buddhism as a state policy. So he has kept the values over conquest. Number third is public welfare. So public welfare is very important. You might be knowing, built, the King Ashoka has built the hospitals, roads, and rest houses. He has been instrumental in that. So it means he has been thinking of public welfare, so as the leader should also. Respect for all faiths, pluralistic leadership. So from King Ashok, we can learn how should we respect the other religions, other persons. Those who are not of our viewpoints should also be respected. A leader should respect the viewpoint of all. Lessons in redemption means a leader can evolve. Overall, the bottom line of this slide is that a true leader can transform himself or herself at any point of time. This can be learned from the history of King Ashok. Next is, friends, attributes of what are the various attributes of the dharmic leadership. So these are the some attributes. Number one attribute is satya, truthfulness. A leader should always follow truthfulness. If you want to be a dharmic leader here doesn't means religious leadership, because dharma and religion, these are both different terms which are used. He should have karuna, compassion. Brahmacharya, discipline should be. Brahmacharya here means true leader is one who is basically disciplined. Daya here means kindness, and shauch, purity of intent. Friends, the intent is more important in any decision. So intent of the leader should be very pious. So this we can learn from the dharmic leadership. Friends, now I would like to share some information. Here we have some women participants also. There had been great legacy of India, where we have women leaders like Gargi and Maitreyi. These are the two characters. These are the two powerful women leaders, which see they have intellectual giants. In University of Delhi, friends, there are two colleges. They have been named after the Gargi and Maitreyi. There is Gargi College also and Maitreyi College also. You could see. So they basically represent the intellectual power. Next is Draupadi. Friends, Draupadi, you might be knowing, she was basically from Panchal state of Panchal. She was also addressed as Panchali because of that in Mahabharata. Concise and courage. So she represents concise and courage. These are the qualities which a leader should have. Next one is Kunda's female disciplines, like in Jainism, equality in wisdom. So these are the disciples in Jainism. Queen Kaushalya, friends, you might be knowing, the mother of King Ram in Ramayana. You might be knowing, she was looking after the affairs of the Ayodhya when the Vanvas was given to King Ram, because his brother Bharat, he was not ready to rule the Ayodhya, but the Queen Kaushalya, the mother of Rama, takes the responsibility, and she was very graceful, and her attitude or fortitude. Okay, grace and fortitude, these qualities can be learned from Queen Kaushalya, because she lived like anything after the passage of her husband, King Dashrath also, and because of the Vanvas of Sri Ram. Mata Khivi in Sikhism, she is basically respected like anything, like langar and community service. So langar and community service means a leader can learn from here, public welfare of all. Now,
let us see the leadership in through detachment. So Gita says that action without attachment. Number two, yeah. Number two, Jainism says renunciation as the strength and nirvana as the goal. The goal, what is the goal? Goal is nirvana. Nirvana here means moksha. And in Jainism, it is known as Kaivalya. So this is the goal. Sikhism, leave the world but above it. And we can learn good things from the story of Janak also, because Janak, the father of Sita, king, and we can learn many things from him also, because we can learn detachment. How can we can lead with detachment? Leadership as seva. How the Bhagavad Gita says that nishkam karma, serve without desires for rewards. So as I have already discussed, that we should not concentrate on the fruit, but we should think of serving without desire for rewards. Guru Nanak, what we can learn, which quality we can learn from the Guru Nanak? We can serve the poor as you serve God. Seva is a divine act. Seva of whom? Seva of our team member, seva of our great citizenship. Now, King Harishchandra story might be knowing, gave up kingdom to uphold the truth. That's why he is known as Raja Harishchandra, is known as Satyavan Harishchandra. Served even in suffering. We might be knowing. If you go through the story of King Raja Harishchandra, you can learn that how, being a king, he has served on the banks of the river Ganga in Banaras, and what the acts he has done. So you should go through that. You can learn some leadership qualities from there also. Buddhist monastic rules, monks lead communities through daily service. That we can learn from Buddhism. Seva builds trust. Followers trust those who serve. So next is this is listening. Listening is basically a great skill of a leader. So listening as a leadership skill. If you can listen, I'm not talking about hearing, I'm talking about listening. So Yudhishthir Sabha listened to sages, courtiers, even adversaries. So you can learn from the Yudhishthir Sabhas. How? Because he used to listen more. Rama's dialogues with the Vibhishan, when embraces advice from unlikely sources. So leadership, if you want to develop your leadership, you should have good leadership listening skills. Buddha, you can learn from Buddha also. Most of the time, the Buddha was silent because he emphasizes patience and perseverance. Next, Tirthankars and dialogue, engaged in inclusive spiritual debates. And true leadership listens first and acts leaders. The crux of this slide is, friends, that a true leader is a leader who listens first and acts leaders. Next is crisis management in scriptures. We can learn crisis like Krishna's peace mission to Hastinapur diplomacy before war. Number one, Sikh gurus under Mughal rule. So Sikh gurus under Mughal rule, what they have done, they have responded with resilience and organization. So when crisis comes, we could see the role of Guru Gobind Singh. Ashoka, after Kalinga war, which I have already discussed, converted grief into reform. Arjuna's despair in Kurukshetra overcome through mentorship. And scriptures show that crisis is opportunity in disguise. Crisis is opportunity in disguise. Friends, inclusivity and unity. So what is the inclusivity and unity, friends? That Rig Veda said, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, one truth, many paths. So the truth can be said in many ways. Buddhist Sangh says open to all caste and genders. Sikh Langar, common kitchen to no hierarchy, we can learn from there.
Rama's treatment of Sabri, that is devotion over birth, and leadership must unify, not divide. The crux of this slide is that the job of a leader is to unite, not to divide. Okay. Next one is the role of Guru in shaping leader. So what is the role? Guru Nanak to Guru Gobind Singh, lineage of wisdom and action. Guru enables transformation of ordinary into extraordinary, and Krishna as a Arjun's Guru, spiritual and strategic guide. So we have seen how Krishna has acted as a spiritual and strategic guide. Mahavir disciplines guided by example, not command. So we could see from the Mahavir Jains that he is guided by examples, not by command. Buddha and Anand leadership by compassion and discipline. So patience and long-term vision. So a true leader should have a patience and long-term vision, like in the case of Sikh Gurus, 10 generations for one mission. We could see in Sikhism, there has been 10 great Sikh Gurus. The first was Guru Nanak Dev, and the last Sikh Guru was Guru Gobind Singh. Now the Guru is Granth Sahib. After the Guru Gobind Singh, there is no Guru, living Guru. The Granth Sahib is Guru, acting as a Guru. The 10 generations for one mission, long-term planning. King Janak, calm rule, enlightened and detachment. We can learn from him. Bhagavad Gita says that do not yield to unmanliness. Endurance is the strength. Mahavir, we could learn from the Mahavir also, friend, because he says at the age of 30, for the next 12 years up to the age of 42, Mahavir was very silent, because this silence has given him the enlightenment. Even Buddha became enlightened only when he became silent. So Mahavir was silent for the 12 years, from the age of 30 to the age of 42. So we can learn from Mahavir. And Buddha's 6-year tapasya, we know both the Mahavir Jain and Buddha, they have done a great tapasya, and vision require, because the vision always requires sacrifice. Vision needs, if you are a visionary, you can see what is going to happen in next 100 years and next 50 years in your organization. Friends, whenever we think of an organization like Wipro has not started its business by developing softwares. Now Wipro is a very big company, but they have started their business by production of the oil, mustard oil. They used to basically sell mustard oil. They have oil. They are in the trading of oils. But now Wipro is known for what? Software. So it means, it shows that how visionary Azim Premji was, how visionary Dhirubhai Ambani was, because they are visionary leaders, because they could see what is going to happen in the next 50 years. Like Ambani also, they have not started their business from the refinery, petrochemical. They have started from the clothing, trading of the clothes, nylon, which is known as nylon. Now they have the largest refinery of Asia in Jamnagar, Gujarat. So a visionary leader, a leader should always be a visionary, but the vision requires sacrifice. Friends, there are certain ethical dilemmas and righteousness actions that Yudhishthir and Yaksh chooses truth over survival. If you go through the Samvad of Yudhishthir and Yaksh, they have chosen the truth over survival. Dilemma of Bhishma, loyalty versus dharma, you could learn from. There are certain, whenever you are a leader, you can face the ethical dilemmas also, friends, because our life is full of dilemmas. But if you go through the character of Bhishma, there was a dilemma whether he should be loyal to the Kauravas or he should follow the dharma and should be on the side of the Pandavas. So there was dilemma of Bhishma. Ashoka's regret post Kalinga, which I have already discussed, that ethical introspection as leadership. Sometimes leaders should also introspect whether they are on the right path or not. So introspection is very important for leadership.
Mahavir's views, absolute commitment to non-violence, no compromise. So, because you might be knowing, friend, that Mahavir has given the philosophy of the Mahatma Gandhi was much influenced by the Jainism. You might be knowing, friends, the Jainism is most popular in Maharashtra, in Gujarat, and in Rajasthan and Madhya Pradesh. So there was lot of influence on the philosophy of the Gandhi, the Jainism philosophy. So Mahavir's vows absolute commitment to non-violence, no compulsion. So ethics define the quality of leadership decisions. Friends, a leader should be ethical while taking the decision. He should not compromise on ethics. So this is the crux of this slide, friends. Now coming to the next topic, leadership through simplicity. Buddha's robe and ball. Minimalize teaches focus. So we should Mahavir's nakedness, radical simplicity for truth. Friend, Mahavir's simplicity we can learn. Guru Nanak's attire, if you go through the attire of the Guru Nanak, identified with the common folk, he used to wear the clothes with which the common folk can also identify themselves. Ram and forest life, dignity in simplicity, and true power lies in simplicity, not show. The crux of this slide is that a true leader draws power from simplicity, not show. Next, coming to courage and righteousness, resistance. So these are the examples, friends, that Krishna counsel in Kurukshetra encourages duty in face of fear. Guru Gobind Singh Khalsa sent warriors of dharma. Buddha versus caste discrimination, quiet but firm resistance. Mahavir's endurance of torture, inner strength is supreme. And courage is scripture in always righteousness, never recklessness. So friends, I am at the end of my lecture. Now coming to concluding reflections, friends. So I would like to conclude my topic that the leader should be as a yogi. He should have balanced wise detachment and purposefulness. Full leadership as sacrifice, that is more about giving than gaining. So a leader is a true leader is one who can give more and gain less. Scriptures as leadership manuals, we can go through the scriptures because these are the leadership manuals, because these scriptures are timeless, universal, and spiritual. The dharma of leadership: act justly, serve selflessly, and lead with love. Lead with love. Ancient wisdom says that modern relevance. The ancient wisdom has a modern relevance because India's scriptures, spiritual traditions offer answers even today. Friends, if we revisit the Indian scriptures, we can basically draw that these scriptures are even relevant today. Friends, thank you to all of you. I hope this my lecture is more of saying more of concentrated on the Indian scriptures selected, because it is not possible to complete all Indian scriptures in 1.5 hours, 1 hours. So I hope that within 1 hour I have tried to accommodate as much I can. Why? Because in spite of seeing others, the Western world, instead of drawing insights from the scriptures of the West, we have lot of Indian scriptures from where we can have leadership. We can draw leadership skills. We can learn the leadership skills. Because friends, if we want to achieve the target of Viksit Bharat 2047, developed India 2047 target, it is not a dream, it is a responsibility, and it is the responsibility of all of us, and this responsibility can be fulfilled with the help of developing leadership by getting insights from the Indian scriptures. Friends, this is all from my side. If you have any questions, you can ask. So I have tried my best to include some portion of the Indian scriptures.
Why this particular session has been included? So that whenever we are, because as a teacher, as a mentor, we should have leadership skills. We are ahead if we are acting as a dean, director, principal, vice chancellor. If we are NSS coordinator, warden, these are all leadership position for the people who are serving in the academic field, so they can draw certain insights from the Indian scriptures, and they can handle it very well. So instead of saying the other side, west side, we have lot of enriched scriptures, we can learn from that. I am thankful to the MMTTC Marathwada University for giving me this opportunity. Friends, I know all of you are very learned, and you might be have been knowing all these points, but my objective was to just give you awareness, so to sensitize, because it is a sensitization program. So okay, please explain the example of leaders you show on leadership slideshow. So if you can, Dr. Shweta, if you can ask some question, if you can clarify your question, I would like to answer. I could not. 1 minute. Okay. Dr. Shweta, can you ask the question? Please explain the example of leaders you show on leadership slideshow. So I have already discussed about the leader like Buddha, Ram, and during my lecture, I have also discussed uh, about the Gandhi, because the inspiration of the Gandhi was friends. He has been inspired from the Jainism philosophy. If you read the Jainism philosophy of Jainism, you can find out, friends, that his most of the teachings, what he has learned, is from the Gandhian philosophy, from the Jainism philosophy only. Many, even Vivekanand, if you talk about the Vivekanand, and if you talk about 1 minute, if you talk about any leader, they have some guru. There cannot be a leader without guru. Shivaji has also a guru. You know, Gandhi has also a guru, Gopal Krishna Gokhale. The guru of Gopal Krishna Gokhale was Dada Bhai Nauroji, the great grandson of India. So it means, if you want to be a leader, you have to draw certain skills sets from your guru. Without guru, you cannot become a leader. Guru, like for Shivaji, the mother was also guru. Swami Samarth, I hope Samarth Das was the guru of Shivaji. So what I want to say, that we have lot of examples, friends. Maharana Pratap, you might be knowing. Maharana Pratap, how he has been successful in defeating Akbar, okay, in Haldi Ghati. So friends, he never accepted the defeat, Maharana Pratap. If you find a common characteristic among these leaders, you will find that they all are dharmic leaders, and their followers, they blindly support them. Why? Because they believe in giving, not in gaining. Friends, is there any other question? You may ask. आप अपना माइक को ऑन करके भी पूछ सकते हैं मित्रों. लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. यू मे आस्क. Yeah. Any participant? Please raise your hand. I hope, because I am in a village right now on a leave vacation, so I hope there was no disturbance, technical glitch. I was worried that whether the voice is clear or not, because right now I am not in Delhi. I am near Varanasi, in a village. Voice was clear, Professor? Yes, sir. Okay.
So I hope. Acha, someone has roll number 57. Baban has asked what. Please explain today leaders. There are many great leaders, friends. If you are not, if you see in a rational way, there are very great leaders also. Our Prime Minister is a great leader, according to me, but you may have some other leader, you may have some other view. Because you can see, after attack, he has been very active. Amit Shah just reached the place where the attack has, so they are very responsive. So if you read, if you read, you can find out there are also today also there are very great leaders. I'm not talking about the political leaders, friends. Leader doesn't means only political leaders. They may be in the corporate world, they may be in the social. You have one very great leader, Anna Hazare from Maharashtra, a great person. So leaders are not only from the political. Somebody who has asked, Ratan Tata was there. So leader is in your home also. Your father may be a good leader, leading the family. So don't try to don't try to only fix it to only political leadership. Okay, they are in the corporate world, in the social world, society also. You might be seeing there are many leaders. They are not trying to get something from the society. They are giving. There are many Maharajas in India. They have devoted many. They have donated many things to the general public. I know many because I love history. You see, from the ancient India, from Maharaj, from Buddha to Jain, to Vivekanand, to Ramakrishna, they are all leaders. A leader doesn't means he should be at the on any post. A leader cannot means if somebody is giving direction to the society, a good direction to the society, he or she is also a good leader. Because we have access to many news channels, we used to see many fraud leaders also. So that is not India, friends. Even at present also, if you like, whenever we have to see, अभी एक हैप्पीनेस का रिपोर्ट आया कि इंडिया के लोग सुखी नहीं है. You know the happiness report, HDI index पे हमारा कम है. It is also a fraud. Pakistan is much better than India in happiness index. Bangladesh, just see what is going on in Bangladesh. हमको आके लोग बोलते हैं सर आप बहुत दुखी हो, इंडिया बहुत दुखी देश है, or all sad people. The sample size, which I was very much surprised to know that they have asked question from only 1,000 people, and they have decided that the Indian people are very sad people. They are not happy. So what I want to say, friend, at present also there are many leaders we have to identify. Guru will never come to us. Any guru, good guru will never come to us. We have to search a true guru, a true leader. Okay, as a shishya, you have to search. And Vivekanand, you might be knowing, Ramakrishna, Swami Ramakrishna has searched him. So that's why he was transformed like anything. So my friends, does academic leadership require any more qualities beside this? Friend, do you think that the question is from Dr. Sanjay, do you think that the qualities which I have discussed from the last 1 hour, if some academic leader has these qualities, whether he require any other qualities, if he is a truthful, he doesn't discriminate, he is a dharmic leader, all these qualities which I have discussed, only 1 or 2 qualities are sufficient for becoming a good academic leader. If you can behave like a Buddha, you can behave like a Gandhi, you can behave like a Mahavir Jain, don't you think that only 2 or 3 qualities are very sufficient? If you don't discriminate with your fellow colleagues, if you are a dharmic leader, you are not only a leader but also a spiritual leader to your team members, don't you think that this is sufficient? Why I have discussed these qualities? Because in society, in academic leadership also, we are lacking these qualities. That's why I have emphasized on these leadership qualities, because this is the need of the hour. Yeah.
Friends, I hope there are no more questions. No, I'm not. There is a question from Nilesh Kakade. So I always used to love interaction with the participant from Maharashtra. The reason being, my schooling is from Maharashtra, so I have learned many things from there. I have been in 2 or 3 cities of Maharashtra. So always, whether it is online mode or offline mode, the Maharashtra is very close to me. So good question from which one, sir? Please explain the leadership. Which one means I have been in Malad, Kendriya Vidyalaya, INS Hamla, in Pune also, Vimannagar. So it was a great opportunity. So, sir, please explain the leadership behavior. See, the behavior comes from, I have already discussed that the first revolution is always in the mind. The first revolution takes place in your mind, and after that, it comes in the society. I have been talking about this. So what I have discussed, friends, in the 1 hour, it is all about behaviors, because these are qualities which I have discussed. They are going to shape the behavior of a leader. So how the behavior, how a leader should act, behave. If a leader is a dharmic leader, his behavior will be always very just to others. He will always try to justify, give justice to everyone who is part of his or her team. Friends, so I hope I have answered almost all the questions. Maybe because I will be sharing this slide with your HRDC coordinator, you can have these slides, because in the slides it is not possible to explain each and everything. If you read more, you will learn more. So in spite of being the professors of one particular field, you should always learn something from the Indian scriptures also, because these scriptures can make us a very good human beings. Whatever you like, you first read it, try to integrate, because first, when we start the process of knowledge, it is like divergent. You know the banyan tree? Banyan tree, there are many stems there, but a coconut tree has only one, uska depth mein hota hai. So first, we learn many subjects. Like history, civic, geography in our school days. And at the last, we do our thesis on a one topic. What means the knowledge starts from divergence, and at last all the knowledge should convergent. There is convergence starts, so that we can take a good decision. The purpose of life, purpose of education is, friends, what is the purpose of education? The purpose of education is to take right decision, and the education helps us to take the right and appropriate and informed decisions. What is right and what is wrong? Selection between right and wrong is the purpose of the education. We learn only one thing from the education, which is most important, that we learn what is right and what is wrong, and we select the right one. So what are the best qualities of academic leadership? There are many qualities, friends, which I have discussed during my slides. That a good academic leader is one who can boost his team for research, for teaching. A good leader is one who is a good listener. In academic field, normally the leaders, they do not listen to their faculty members. A leader is one who can listen to others. He should have good listening skills. He should have good conceptual skills. He should be compassionate. He should lead from the front. He should involve each and every faculty members, students, in decision making, in collective decision making. So there are many. That's why
UGC is also saying that in academic council, in board of studies, there should be representation from the alumni, from the industry, from the students. But a true academic leader is one who can take collective decisions. So collective decision maker. So these are the some qualities which a good academic leader should have. So friends, thank you to all of you. This is all from my side. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So session is over, sir. Yes, sir. Chaliye. Thank you so much, all of you, for patient listening. I am thankful to all of you.